6 श्लोक संख्या 49 Sakadachid upasina Atmapa navatam atmanaha Atma panamvaham atmanaha Atma panatvam atmanaha Dadarshe Bhagavad-gita Dadarsha Bhagavad-gita Minasanga Samutitam Sakadachid upasina Atmapannavam atmanaha Dadarsha Bhavricharya Mina Sangha Samutitam Sakadachid upasina Atmapannavam atmanaha Adarsha Bhavracharya Oh, yo, okay. Mena Sangha Samohitam Sakavachid upasina Atmapanavam atmanaha Tadarsha Bhavracharyo Mena Sangha Samotitam Next. Sakadachid upasina Atmapanavam atmana Sabhauricacharyo Nina Sangha Samudhitam Sakadachid upasina Atmapanavam atmana Vaishnavas. Sakadachid upasina Dadarsha Bhavracharyo Mina Sangha Samudhitam Sakadachid upasina
Translation. अनुवाद। Thereafter, one day, while Subari Muni, who was expert in chanting mantras, was sitting on a secluded place, तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौबड़ी मुनि एक दिन जब एकांत स्थान में बैठे थे, he thought to himself about the cause of his fall down, तो उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा, which was simply that he had associated himself with the sexual affairs of the fish. कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर लिया था। Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Vishwanath Chakravarti Thakur remarks that Subari Muni had fallen from his austerity because of a Vaishnava Aparad. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि सौबड़ी मुनि का उनकी तपस्या से पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था। The history is that when Garuda wanted to eat fish, Subari Muni unnecessarily gave the fish shelter under his care. कथा इस प्रकार है कि जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा, तो सौबड़ी मुनि ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया। Because Garuda's plans for eating were disappointed, Subari Muni certainly committed a great offense to a Vaishnava. क्योंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश हुआ, इसलिए सौबड़ी मुनि ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया था। Because of this Vaishnava Aparad, an offense at the lotus feet of a Vaishnava, Subari Muni fell from the exalted position of a mystic tapasya. इस वैष्णव अपराध के कारण सौबड़ी मुनि का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ। One should not therefore impede the activities of a Vaishnava. अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले। This is a lesson we must learn from this incident concerning Subari Muni. तो हमें सौबड़ी मुनि से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। Oma Gena Tamarindasya Gena Gena Shalakaya Taksuvanminitam Gena Tasmai Shri Vigraha Sri Caitanya Mahaprabhu Stapitam Gena Bhutale Swayam Dukha Kadamayam Jadisva Padantiham Vandeham Sri Guru Sri Jatapanakamadam Sri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Pragatam Praganavatam Siddham Sarvaitam Sadhutam Paritana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Vara Sagana Lalita Shri Vigraha Tamascha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosite Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrinda Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Kripasya Kripasindhu Vaja Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare. So, this is the story of the fall down of Subari Muni. तो यह कथा है सौबड़ी मुनि के पतन का। He was a great sage who was performing severe austerities. He was a yogi. तो ये बहुत बड़े योगी थे जिन्होंने की बहुत कठिन तपस्या की थी। I say was, but this possibly might still be alive, you know, because these yogis in our universe even, they generally reside on the higher planets. They don't. You can't imagine that a yogi like Subari is going to hang around on the Earth planet to deal with McDonald's and cow slaughter. हो सकता मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो घटना है भूतकाल में हुई, लेकिन जो योगी होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो उच्च लोकों में अभी भी हो सकते हैं स्थित हो। ऐसा हो सकता है कि सौबड़ी मुनि जैसे ऋषि जो अभी इस पृथ्वी पर भी मैकडॉनल्ड्स और ऐसे जो अन्य चेन है वहाँ के लिए। Yogis like Subari Muni, they have no problem with interplanetary travel. तो जो सौबड़ी मुनि के समान जो योगी होते हैं, उनको अंतर जो ग्रह होते हैं
ग्रहों पे आने जाने में कोई समस्या नहीं है। They don't get into some very crude petrol machine that explodes like the NASA space shuttle, you know. Twice it exploded. Twice, not once. Twice it exploded. तो ये जो ऋषि होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि नासा जो कि एक अमेरिका की संस्था है, उसने स्पेस शटल भेजा था स्पेस के अंदर, तो 2 बार वो फट गया, वो जो उनका जो अभियान था वो असफल रहा। लेकिन जो योगी होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। Fix the volume. His is not loud enough. हरे कृष्ण। Yeah, but you should. Where's your trusty assistant? Come on, go fix the volume. His volume, my volume is fine. His is too soft. So to get the context of what's going on here, and not everybody present comes to Bhagavatam class every day, so I will review the beginning of the story, not exactly the beginning, but the important parts here. तो उन भक्तों के लिए जो प्रतिदिन कक्षा में नहीं आ पाते, मैं ये जो कथा चल रही है उसकी शुरुआत से कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो बताऊंगा। So we're going back to text number 41. तो हम श्लोक संख्या 41। Those of you who were here wouldn't be able to tell me what it said anyways. It's Kali Yuga. Manda samanda mandyo manda bhagya. हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रतिदिन आते भी होंगे, लेकिन क्योंकि कलियुग का प्रभाव ऐसा है कि हम भूल जाते हैं। Short duration of memory, you know. तो जो हमारी याददाश्त है बहुत छोटी होती है। So in the it's actually verse number 40. तो ये श्लोक संख्या 40 है। 39 and 40. 39 और 40 एक साथ है दोनों से। Go back to verse number 40. Subari Rishi was engaged in austerity deep in the water of the river Jamuna. सौबड़ी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे। So he was not in any ordinary mundane place. He was in the Jamuna even. तो ऐसा नहीं कि वो कहीं ऐसे वैसे जगह पे थे जो यमुना नदी के अंदर थे। But that could not protect him from Vaishnava Purana. Try to see. आप देखने का प्रयास कीजिए कि उनका यमुना नदी के अंदर होना भी उनको वैष्णव अपराध करने से बचा नहीं पाया। So Srila Prabhupada is explaining that his aparad was he interfered with Garuda's dinner. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने गरुड़ देव का जो रात्रि का भोजन था उसके साथ छेड़छाड़ किया। I mean, Garuda is non-veg. तो जो गरुड़ है वो If you don't like that, you can go discuss it with him. You can say, no, Garuda, you should be vegetarian. You're Hindu, you know, you should be vegetarian. कि आपको जो है वेजिटेरियन होना चाहिए, आपको साग सब्जी भाजी। You take a sharp beak and chop your head off. तो हो सकता है वो बहुत तेज झपट्टा मारेंगे और आपका। So it is natural he eats snakes and fish. तो वो स्वाभाविक रूप से जो है मछलियाँ और सांपों को खाते हैं। But anyways, what happened is Subari Muni saw a pair of fish engaged in sexual affairs underwater. तो ऐसा हुआ कि सौबड़ी मुनि ने जो मछली के एक जोड़े को मैथुन में स्थित देखा पानी के अंदर। Thus he perceived the pleasure of sex life. तो उनको जो है वो मैथुन जीवन के आनंद की अनुभूति हुई। And induced by this desire, he went to King Mandahata and begged for one of the king's daughters. तो इससे प्रेरित होकर राजा मांधाता के पास गए और उनकी एक कन्या की याचना की। In response to the request, the king said, "O Brahmana, any of my daughters may accept any husband according to her personal selection." तो इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। So King Mandata was at that time was the king of Mathura. तो उस समय जो राजा मांधाता थे वो मथुरा के राजा थे। And Subari Rishi was engaged in austerity deep within the water of the river Jamuna. और सौबड़ी मुनि जो है वो यमुना नदी के गहरे जल के अंदर अपनी तपस्या में स्थित थे। And then after viewing the fish engaged in sexual activity, और जो मछलियों के जोड़े को मैथुन जीवन में रत देखकर he became afflicted by lust himself.
तो स्वयं विषयी जीवन के सुख से प्रभावित हो गए। So he emerged from the water and went to King Mandatta तो वो पानी से बाहर निकले और राजा मानदाता to ask that one of the king's daughters become his wife. और उनसे याचना की क्योंकि एक पुत्री उनकी पत्नी बन जाए। So, looking again at today's verse, why did he become so weak? तो आज का जो श्लोक है उस पे देखें कि वो क्यों इतना कमजोर पड़ गए। So Srila Prabhupada is quoting from the purports by Vishwanath Chakravarti Thakur. श्री प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्यों से यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। Try to understand, this is a sign of a bona fide acharya. आप समझने का प्रयास कीजिए, यह एक निशानी है एक परंपरा में स्थित आचार्य की। They faithfully repeat the previous siddhanta or conclusions of the prior acharyas. That is a real acharya. Anyone else is bogus. तो एक जो वास्तविक आचार्य होते हैं वो पुराने जो परंपरा में आए गुरु हैं आचार्य हैं उनके द्वारा कहे गए बातों को ही दोहराते हैं। So it might be some time before any of you happen to be in Los Angeles, California, USA, where I come from. तो हो सकता है आप में से कोई लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से होंगे जहाँ से मैं हूँ। But there, every day in the morning, Srila Prabhupada's room is open for darshan. तो वहाँ पे प्रतिदिन श्री प्रभुपाद जी का जो कमरा है उसको दर्शन के लिए खोला जाता है। It's exactly the same as it was when Srila Prabhupada was physically on the planet. तो अभी भी उसी प्रकार से है जब श्री प्रभुपाद जी स्वयं उपस्थित थे इस धराधाम के ऊपर। So that means his library is on the wall there. तो इसका मतलब ये है कि उनकी पुस्तकालय है वो दीवार पे स्थित है। His desk is there. The dictaphone they keep. उनका जो मेज है वो भी वहाँ पे पड़ा है और वो जो His bedroom exactly the same as it was when he was on the planet. तो वो जो मशीन जिससे प्रभुपाद जी अनुवाद किया करते थे वो भी वहाँ पे है। वो सब बिल्कुल उसी स्थिति में है जैसे श्री प्रभुपाद जी के समय था। It's actually a very pleasant room. Lots of light. बहुत ही सुंदर कमरा है उसमें बहुत सारी The walls are painted a very pleasing turquoise color. तो जो दीवार है उनको बहुत सुंदर रंगों से सजाया गया है। The point is that there's a bookshelf. Now, of course, the bookshelf is locked behind glass because some fool might come and take one of the books, even though they don't read Sanskrit. तो वहाँ पे एक पुस्तकों का जो है अलमीरा भी है तो अभी तो उसको बंद करके रखा जाता है क्योंकि कोई भी मूर्ख व्यक्ति आके उसमें से किताब निकाल के ले जा सकता है। So there are the original books in Sanskrit by Vishwanath Chakravarti Thakur, by Jiva Goswami, Rupa Goswami, the original books what Srila Prabhupada draws from in his famous Bhaktivedanta purports. Those reference books are there in Los Angeles. तो वहाँ पे वो पुस्तकें अपनी उपलब्ध हैं जिसका श्री प्रभुपाद जी इस्तेमाल करते थे अपने तात्पर्यों को लिखने के लिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी के तात्पर्य वाले जो पुस्तक हैं वो अभी भी वहाँ पे रखे गए हैं। So therefore we see that Srila Prabhupada is quoting from just Vishwanath Chakravarti Thakur. तो इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इंगित कर रहे हैं। Prabhupada is not trying to be excessively creative by concoction. See, anyone who does like that is bogus. तो प्रभुपाद जी कोई ऐसी मनोधारणा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसा करता है वो धूर्त व्यक्ति है। So Prabhupada is making it very clear because of Vaishnava Purana, he lost his spiritual strength. तो प्रभुपाद जी बिल्कुल साफ-साफ यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि स्वामी मुनि ने अपराध किया था वैष्णव अपराध इसलिए उनकी सारी योग बल जो था वो नष्ट हो गया। He was not able to control his senses as a result of being weakened by offense against Garuda. तो अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया था। So here the lesson is very, you could say, loud. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत उच्च स्वर में जो शिक्षा हमें प्रदान की जा रही है। Because Prabhupada says that Subari Muni certainly committed a great offense to a Vaishnava. प्रभुपाद जी यहाँ साफ-साफ लिख रहे हैं कि स्वामी मुनि ने एक बहुत बड़ा अपराध किया एक वैष्णव के प्रति। But here we see that materially speaking, he had a quote good motive unquote. तो अगर हम वैसे भौतिक दृष्टि से देखें तो गरुड़ जो है एक पक्षी थे। What is he trying to do, Prabhu? तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर?
He went for taking his dinner. He went for taking his dinner. Garuda went to take his dinner. Garuda went to dinner, yes. So Garuda. But what was Subari Muni trying to do was my question. You have to listen carefully to my question. महाराज का प्रश्न है कि सौबरी मुनि क्या कर रहे थे उस समय? So, what was Subari Muni trying to do? तो सौबरी मुनि क्या करने का प्रयास कर रहे थे? Get married. Get married. He was trying to get married. गलत जवाब. Any other speculators? No, I'm talking about when he was in the water, not after he went to the king. After he went to the king, yes, he wanted to marry one of the beautiful daughters of the king, yes. तो महाराज का प्रश्न है जब सौबरी मुनि जल के अंदर स्थित थे तो Okay, he says an answer, go. तपस्या कर रहे थे. He was doing austerity. He was doing tapasya. He was doing austerity, yes, but what I'm trying to say is, why did he stop Garuda from eating the fish? महाराज ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने गरुड़ जी को क्यों रोका मछली खाने से? All right, the second try. I don't normally give people a second try. He wanted to protect the fish. He wanted to protect the fish. क्यों प्रभु जी ने उत्तर दिया क्योंकि वो मछलियों को बचाना But in this context, that is mundane. तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल भौतिक है. But if you want to know something interesting, this is from my personal activities when I first, in the first years when I first went to Mayapur. तो ये बहुत रुचिकर है आपको जान के बहुत अच्छा लगा. मैं जब पहली बार मायापुर गया था We're talking about around 1974, so तो हम लोग 73 maybe. 1973-1974 की बात कर रहे हैं. So I was a little crazy. I mean, I did something really crazy. तो मैं थोड़ा एक अलग किस्म का था उस समय. You remember? I've told this before. I also, there was Bengali fishermen out there with their big nets. तो वहाँ पे जो बंगाली मछली पालने वाले मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते थे वो भी बड़ी-बड़ी अपने जालों के साथ. And so there was at least 100 or more fish in the nets of the fishermen. तो उनके जाल में 100 से ज़्यादा मछलियाँ फंसी हुई होती थी. So I also felt sorry for the fish. तो मुझे भी बहुत बुरा लगा मछलियों को देखकर. I somehow or other got control of the net and I dumped the fish out and back into the water. तो मैंने उन मछुआरों से वो जाल छीनकर और उन मछलियों को वापस पानी में डाल दिया. Fortunately, because I was a Westerner, the fishermen just thought it was funny. तो क्योंकि मैं एक फिरंगी था तो इसलिए जो मछुआरे थे उनको लगा कि ये बस ऐसे मजाक कर रहे हैं. I was very lucky. He could have got together with some of his buddies and beat me, you know, but I was lucky. Instead, he just thought it was funny. Look at this crazy Westerner, you know. It was the craziest thing to do. मेरा सौभाग्य था कि उन लोगों ने पकड़ के मुझे पीटा नहीं. उनको बस यही लगा कि मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ उनके साथ. But I was also feeling compassion for the fish, but that was not the right action. तो मुझे भी मछलियों के प्रति दया आ रही थी हालांकि ये सही कार्य नहीं था. It also did not represent the Vaishnavas properly because the man has to make a living. That's his living. You can't tell him to do something else. तो मैंने एक वैष्णव का सही आचरण भी नहीं किया क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो अपना जीवन यापन करने के लिए सब कुछ कर रहा था. So Subari Muni was feeling the problems of old age. तो सौबरी मुनि को जो वृद्ध अवस्था में जो परेशानियां होती हैं वो महसूस हो रही थी. In the 42nd verse he says, he's thinking, I am now feeble because of old age. तो 42वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि उनको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो वृद्धावस्था में हैं. My hair has become gray. उनके जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं. You know, I used to have nice black hair. तो महाराज कह रहे हैं कि एक समय मेरा जो बाल है बिल्कुल. I was living in Los Angeles. लॉस एंजलिस में. And they used to put on first-class plays in Los Angeles. There were some very talented actors there. लॉस एंजलिस में भक्त लोग बहुत सुंदर नृत्य नाटिका किया करते थे. So one of the plays had to do with life of Bhaktivedanta Thakur.
तो एक ऐसा नाटिका प्रस्तुत किया भक्तों ने जिसमें कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जीवनी। So I was chosen to play Bhaktivedanta Thakur. तो मुझे चुना गया था श्री भक्तिविनोद ठाकुर का जो किरदार है वो निभाने के लिए। I was about 30 years old. उस समय मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। I didn't have any gut at the time. तो उस समय मैं बिल्कुल दुबला पतला। I mean, I had a gut, but it wasn't, sticking out. But I mean, Bhaktivedanta Thakur, he was chubby, so if I'm a little chubby now, I'm just falling parampara. No, Prabhupada was not chubby like that, but Bhaktivedanta Thakur was. लेकिन चलो भक्तिविनोद ठाकुर थोड़े तंदुरुस्त हुआ करते थे, तो अभी मैं भी थोड़ा तंदुरुस्त हूँ, तो मैं जो है परंपरा का पालन कर रहा हूँ। हालांकि श्री प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे। So I was 30 years old. I'm playing Bhaktivedanta Thakur was perhaps 60. तो उस समय मैं 30 वर्ष का था, लेकिन मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का किरदार निभा रहा था, जो कि 60 वर्ष की आयु। So they had to put white makeup in my hair. तो उस समय उन्होंने मेरे काले बाल को सफेद बनाया। And my eyebrows. और मेरे जो भाव हैं उनको भी सफेद। And because my belly wasn't sticking out enough, so they had to draw a black line across my chest and shadow it in such a way. I mean, this is the way it's done in Hollywood, तो उस समय क्योंकि मेरा जो उदर है वो बहुत बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ था, तो उन्होंने ऐसा एक काला रंग का स्याही लगा के और कुछ इस प्रकार से किया ताकि वो लगे। By using this makeup technique, it was able to seem as though I was more chubby than I was. तो वो जो मेकअप करके उन्होंने इस प्रकार से मुझे प्रस्तुत किया कि मैं जितना मोटा नहीं था लेकिन मोटा दिख रहा था। Too bad there wasn't any photographs. And in the end, I actually looked like Bhaktivedanta Thakur. I bushed up my eyebrows, तो उन्होंने इस प्रकार से मुझे सजाया था कि मैं बिल्कुल भक्तिविनोद white hair. लग रहा था। So it was quite convincing. तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है। So, anyways, I used to be young. तो मैं एक समय में I mean, of course, when I say I mean this body used to be young. I'm Navyovana, but this body is not, obviously. तो ये मेरा मैं कहने का तात्पर्य है मेरे शरीर से, क्योंकि मैं तो हमेशा नवयौवन हूँ, लेकिन जो मेरा शरीर है। Here Subari Muni describes old age. तो यहाँ स्वामी मुनि जो है वो वृद्धावस्था का चर्चा कर रहे हैं। He says, my hair has become gray. वो बताते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं। Looking in the audience, I can see some gray hair. तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ भक्त हैं। Old age is already coming. वृद्धावस्था आ रही है। Quite frankly, if you could make it to age 72, you'll be lucky. तो अगर आप 72 साल जी पाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। Unfortunately, so many of my God brothers and God sisters, they're dying. And some of them around age 60 or so, leaving their bodies. Unfortunate, very unfortunate. तो ये बहुत ही अभागे की बात है कि मेरे कई गुरु भाई और गुरु बहन हैं जो कि So he's in an old man body. तो ये अभी जो स्वामी मुनि हैं एक वृद्ध शरीर के अंदर है। He says, my skin is slack. वो कह रहे हैं कि मेरा जो चमड़ा है वो बिल्कुल ही And my head always trembles. और मेरा जो सर है हमेशा घूमता रहता है। So he was physically not in very good shape. तो वो जो है शरीर के स्तर पे बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं थे। After all, as a yogi, who knows, he might have been thousands of years old, तो किसको पता है कि योगी होने के नाते हो सकता है उनके उम्र 1000 साल से ज्यादा हो। But the signs of old age were certainly there. तो लेकिन जो वृद्धावस्था की निशानियां हैं वो उस समय उपस्थित थी। And when Vidura was preaching to his brother Dhritarashtra, तो जब विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र को प्रचार कर रहे थे, he was trying to convince Dhritarashtra, give it up, give it up, give up all this nonsense, give up all this, sense gratification. तो बार-बार उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये सारी जो इंद्र तृप्ति है इसको छोड़ दो। What level of integrity do you have? तुम्हारी जो निष्ठा है वो किस स्तर की है? Because Dhritarashtra was blind, so then he could not be in the battlefield. तो जो धृतराष्ट्र थे क्योंकि वो अंधे थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल था जीवन। So he had a royal tent, in first class decorations.
हालांकि वो अंधे थे, लेकिन क्योंकि वो राजा थे तो उनके पास बहुत ही सुंदर उनका टेंट था जिसमें कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पहले के जमाने में जब युद्ध हुआ करता था तो जो राजा होते थे उनका युद्ध के मैदान में भी जो टेंट होता था बहुत It would be a portable palace is what it would be, such a luxurious tent. वो इस प्रकार से होता था जैसे आप समझ लीजिए कि एक चलता फिरता महल के समान हो। I mean, स्थिति होती थी। we make nice tents at Kumbh Mela, but it would be nothing like the tent of a king in the old days. तो हम लोग भी कुंभ मेला में टेंट बनाते हैं, तंबू टांगते हैं, लेकिन जो राजा होते थे उनका जो टेंट हुआ करता था वो बहुत There would be beautiful ghee lamps for lighting the place. वहाँ पे बहुत ही सुंदर घी से जलते हुए Every luxury of being in the palace. वहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधा जो कि महल के अंदर होती थी। So that's where Dhritarashtra was situated at the time of the Battle of Kurukshetra. He couldn't go on the battlefield. He was too old and blind. तो धृतराष्ट्र भी बहुत बुरे थे और अंधे थे, तो वो युद्ध के मैदान पे नहीं जा पाए, इसलिए वो महल के अंदर ही स्थित थे। So how did he find out what was going on? तो उनको कैसे पता चला कि युद्ध में क्या हो रहा है? Sanjay said, Sanjay told the Dhritarashtra all the things. Sanjay told him all the incidents that are happening in the field. Yes, Sanjaya was a disciple of Srila Vyasadeva. तो महाराज ने प्रश्न पूछा कि धृतराष्ट्र को कैसे पता चल रहा था कि युद्ध के मैदान में? And तो धीर शांत प्रभु ने उत्तर दिया कि संजय उनको सब कुछ बता रहे थे। fools think that television was invented in, let's say, the 1960s or something like that, you know, in recent times. Fools. मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो टीवी है उसका आविष्कार 1960 के दशक में हुआ। They don't know about mystic television, उनको पता नहीं कि एक जो जादूगरी टेलीविजन होता है going back for millions of years. The illustrations there in the Bhagavad-gita showing the chest of Sanjay. तो भगवद गीता के अंदर एक ऐसा तस्वीर भी है जिसमें संजय का जो है सीना, where he is acting as a TV monitor. I mean, they're dramatizing the situation. तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो जो है एक दूरदर्शन के मॉनिटर के समान काम कर रहे हैं। And by the mercy of Srila Vyasadeva, he could crystal clear see what was going on the battlefield. और श्री व्यासदेव की कृपा से उनको सब कुछ साफ-साफ दिख रहा था जो कि युद्ध के मैदान के अंदर हो रहा था। Dhamak Kshetra, Kurik Kshetra, you know, so he was, king was unable to see, so he wanted to know, what did my sons and the sons of Pandu do? What's going on out there? Mystical television. So, after Duryodhana and his 99 brothers, there were 100 sons of Dhritarashtra, and they were all 100 of them are wiped out in the battle. So, Yudhishthira Maharaj being a Mahatma, he was a king, he was Kshatriya, he was not a Brahmana. But a genuine Brahmana must be Mahatma. And a genuine Kshatriya, if they're taking the role of king, they must also be Mahatma. और एक जो वास्तविक क्षत्रिय है वो भी अगर राजा का कर्तव्य निभा रहा है तो उसको भी एक महात्मा के समान होना चाहिए। So what are they called as a result? तो इसलिए क्या कहे जाते हैं वैसे राजा राजऋषि राजऋषि Rajarishi, Haribol, very good. He's a very humble devotee, but you all should take his example. He answered the question correctly the first time. You can learn from him. Rajarshi is a combination of the two words, Raja, you all know the meaning Raja, and Rishi. So they were combination. But unfortunately, Dhritarashtra was polluted by false ego. Mundane attachment. He knew what was to be done, what was not done, but as Prabhupada points out, but he was spiritually blind as well as physically blind.
स्तर पे अंधे तो थे ही, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे भी अंधे थे। So Yudhishthira Maharaj didn't hold any grudge. तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में कोई ऐसी गलत भावना नहीं थी उनके प्रति। Now he was the emperor and he had regained his kingdom that had been stolen by Duryodhana. तो वो अभी राजा थे और वो पुनः स्थापित हो चुके थे और पूरा साम्राज्य उनका था। So he graciously gave shelter to Dhritarashtra. तो इसलिए उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक धृतराष्ट्र को उनका सम्मान। Here we see the qualities of a Vaishnava. आप देख सकते हैं कि एक वैष्णव के गुण क्या होते हैं। He could have been furious. An ordinary person would have been furious and wanted to personally kill him. हो सकता था युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्से में हो जाते और वो स्वयं धृतराष्ट्र को मारना चाहते। But Yudhishthira was like Dharmaraj. He was like Dharma personified. लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं, वो स्वयं धर्म के एकदम स्वरूप हैं। So instead he gave shelter to elderly Dhritarashtra, gave him complete shelter, nice living in the palace. तो उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की और उनको अपने महल में रहने के लिए स्थित किया धृतराष्ट्र महाराज को। So this is extraordinary. He had no bad feelings even. Just see, even though Dhritarashtra in one sense was the brain behind the battle, no, Duryodhana was really the mover and shaker. युधिष्ठिर महाराज के हृदय में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं थी धृतराष्ट्र के बारे में। हालांकि धृतराष्ट्र जो था वो एक बहुत बड़ा कारण था जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र। But out of bodily affection and attachment, Dhritarashtra, you could say, he was just a yes man to Duryodhana. He just, he couldn't stand up to Duryodhana. Duryodhana had a lot of Shakti, the wrong kind. लेकिन हम देख पाते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो दुर्योधन से इतना प्रेम करते थे कि सारी बातों को जी हाँ कहा करते थे। So his father just deferred to him on everything out of attachment. तो वो इतना उनका आसक्ति था दुर्योधन के प्रति कि वो हर चीज दुर्योधन से पूछा करते थे। So in one sense you could say that Dhritarashtra was king in name only, because in reality Dhritarashtra was acting as the king and just using his father as a puppet. This is very sinful. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो सिर्फ नाम के राजा थे, क्योंकि जो सारा निर्देश है, सारा आदेश है वो दुर्योधन से पूछ के दिया करते थे। So Duryodhana was the last to die of the 100 sons. तो दुर्योधन आखिरी पुत्र था 100 में से जो मारे गए कुरुक्षेत्र में। Then Dhritarashtra was invited by Yudhishthira Maharaj to come and live at the palace. तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र उनको ऐसा इनविटेशन मिला उनको। So he was living Yudhishthira Maharaj was completely honoring his kingly stature. He wasn't giving him, saying, well, you've done wrong, you rascal, you sinful rascal. We're just going to give you a bungalow on the side with some basics, not like that. तो युधिष्ठिर महाराज पूर्ण रूप से धृतराष्ट्र महाराज को एक उसी प्रकार का सम्मान दे रहे थे जो कि एक राजा को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बोला कि आपका कोने में एक कमरा बना देंगे, आपको वहां रहना होगा। But he was, relaxing and you could call it royal retirement in the palace of King Yudhishthira. He was relaxing very nicely in retirement. तो धृतराष्ट्र जो है वो पूरा आरामदायक स्थिति में थे। महाराज युधिष्ठिर का जो महल था उसके He was eating their food, वो उनका खाना खा रहे थे, drinking their drinks, उनका जल पान कर रहे थे। must have been watching their entertainment if there were, dancing girls, whatever. I mean, kings used to do this, उनके मनोरंजन के साधनों का उपभोग कर रहे थे, जैसे जो That was their service, dancing girls. तो युवतियों का जो नृत्य होता है राजाओं के लिए ऐसा। But Vidura, he had love and affection for his brother. लेकिन जो विदुर है उनके हृदय में बहुत प्रेम था और बहुत सद्भावना थी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के प्रति। So just instead of just letting him rot in the palace, he wanted to inspire him, or you could say push him into spiritual life. तो उनको महल में सड़ने के बजाय वो चाहते थे कि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करें। Now in this there's a great lesson. There's a great lesson of that sometimes preaching is not just sweet flowery words. That's a terrible misconception to think, preaching should only be, it depends. Deshikalapatra, I mean, generally when we're talking to public, we should be sweet and polite. But Deshikalapatra,
तो यहाँ पे एक बहुत ही महान शिक्षा हमें मिलती है कि जो हमारा प्रचार है ऐसा नहीं कि हमेशा खाली अच्छे अच्छे गोल गोल शब्द बोलने होते हैं, ये समय काल और परिस्थिति के ऊपर बहुत आश्रित है कि हम किस प्रकार का प्रचार। Out of love, Vidura was trying to save his brother. तो प्रेम के वश जो विदुर है वो अपने भाई भ्राता धृतराष्ट्र को बचा। To do that, he had to resort to shock therapy. तो ये करने के लिए उनको जो है उनको करंट देना पड़ा। Because Dhritarashtra was completely complacent and just enjoying his easygoing retirement in the palace with all amenities, you know. क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो बहुत आरामदायक स्थिति में थे और बड़े ही वो थोड़ा आलस्य में आगे थे और Servants, good food, entertainment, whatever he wanted. तो अच्छे खाना खा रहे थे, मनोरंजन के जो साथ सामान उपलब्ध थे उनका भोग कर रहे थे। So Vidura, he took the tactic of tough love. It's called tough love. तो जो विदुर हैं उन्होंने ये हथकंडा अपनाया कि जो थोड़ा कठोर प्रेम देने का। So he said to Dhritarashtra, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, your teeth are loosening. तुम्हारे दांत झड़ने वाले हैं। Your hair is falling out. तुम्हारे जो बाल हैं वो भी झड़ रहे हैं। Mucus is coming from your body. तुम्हारे शरीर से जो लार निकल रहा है। These are the signs that his death is approaching. तो ये सब निशानी है कि मृत्यु आने वाली है। Now on the last stage of your life, you must take up devotion to Supreme Personality of Godhead and austerity and penance. After all, you've been very, very sinful. Now you must take to austerity. तो अब तुम्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण में तपस्या करनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि तुम हर प्रकार का तप करो, योग। It's the only way you can save yourself. ये सिर्फ यही Boom, boom, boom. Heavy preaching. Left punch, right punch, left punch, right punch. उनको दाहिने हाथ से बाएं हाथ से खूब मुक्का मारने के समान ऐसा उनको बोला उन्होंने। So then, I don't recall the time gap, but it was soon after Vidura, we say in America, give him the sauce, you know. महाराज कह रहे हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि कितना समय लगा, लेकिन थोड़े समय में ही विदुर के कहने पे जो धृतराष्ट्र है वो महल छोड़ के वो आगे चले गए। Give him the sauce was devotee slang for red hot chili peppers. तो ये जो महाराज मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं ये अमेरिका के अंदर भक्त लोग इस्तेमाल किया करते थे। The Vasuki Nishinga treatment. तो ये निस्विंग भगवान के उपचार के समान था। You combine the fire from the mouth of Vasuki with the blazing effulgence of Lord Nishingadev. तो जैसे वासुकी के मुख से आग निकलता है, उस आग की तुलना जब भगवान नरसिंह देव के शरीर से निकलते हुए कांति। I mean, this is just an example, Nishinga Vasuki. तो ये एक उदाहरण मात्र है वासुकी और नरसिंह भगवान का। इस प्रकार जैसे महाराज कर रहे हैं। Burning everything. तो जैसे वो सब कुछ जला के राख करते थे, वासुकी के मुख से जो आग निकलता था। So, this kind of preaching Vidura was doing. तो इस प्रकार का प्रचार विदुर कर रहे थे। So I don't recall the time gap. मुझे याद नहीं कितना समय लगा, लेकिन But soon after Vidura gave him the red hot chili peppers, तो विदुर के द्वारा कठोर वाणी बोलने के थोड़े समय बाद ही so Vidura came in to the palace. Dhritarashtra was gone. तो जब विदुर वापस आए थोड़े समय बाद महल के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि धृतराष्ट्र वहां से चले जा चुके हैं। He was shocked. And Gandhari was gone also. The wife of Dhritarashtra was also gone. और धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी वो भी चली गई थी। तो ये देखकर विदुर बहुत अचंभित रह गए। Vidura was very shocked. विदुर को बहुत अचंभा हुआ। What happened to Dhritarashtra? धृतराष्ट्र को क्या हो गया? So somehow or other, the family members guessed that he had gone to the forest. तो किसी प्रकार से जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि He didn't leave any note behind. He didn't even leave a letter behind. They just वो अपने पीछे कोई पत्र छोड़ के तो नहीं गए थे, figured it out. लेकिन बस ऐसा Because Dhritarashtra had gone to the forest and began performing severe austerities. क्योंकि धृतराष्ट्र जंगल जा चुके थे और वहां पे कड़ी तपस्या कर रहे थे। And then he
using yogic powers, he burst into flames, or I don't recall if he burst into flames. Yes, he burst into flames by his own power. तो अपनी योग बल के, अपनी तपस्या के बल पे उन्होंने अपने शरीर को स्वयं ही अग्नि में, And then Gandhari entered into the fire also, Sati, right? उसी अग्नि में प्रवेशित हो गई, सती बन गई. So in this way, Subhari Muni is saying, my skin is slack, my head always trembles. तो इस प्रकार से सौबरी मुनि कह रहे हैं कि कैसे जो उनका शरीर का जो चमड़ा है वो बिल्कुल ही ढीला पड़ गया है और उनका जो सर है वो घूमता रहता है. Women do not like me. जो स्त्रियां हैं मुझे पसंद नहीं करती. Since the king has thus rejected me, I shall reform my body in such a way as to be desirable even to celestial women. क्योंकि मुझे राजा ने यहाँ से एक प्रकार से निकाल दिया है और मैं जो ऊपर के लोगों की स्त्रियां हैं उनका संग करना चाहता हूँ. Or to speak of the daughters of worldly kings. तो ये जो भौतिक राजा हैं उनकी पुत्रियों. So Srila Prabhupada's point is that he entered into this lusty enjoyment mood because of Vaishnava Purana. तो उनके अंदर ये अपने इंद्रियों को तृप्त करने की भावना इसलिए आई क्योंकि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया था. We must learn from this the danger of Vaishnava Purana. तो हमें यहाँ से यही सीखना है कि वैष्णव अपराध का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है. We see that many prominent men in this movement, very big positions, became puffed up. हमने देखा इस आंदोलन के अंदर भी कई बड़े बड़े महान भक्त जो हैं वो थोड़े अहंकार में आ गए, थोड़े गर्वित हो गए. In several cases, they were responsible for seeing that millions of Prabhupada's books were distributed. तो कुछ समय, एक समय ऐसा था जब वो इस प्रभुपाद जी के लाखों पुस्तकों के वितरण होने के कारण थे. They inspired the opening of temples, उनकी प्रेरणा से कई मंदिर खुले, making thousands of devotees. कई हजार शिष्य बने, भक्त बने. Yet they fell from that position. Why? लेकिन फिर भी वो अपनी स्थिति से च्युत हो गए. क्यों ऐसा हुआ? Vaishnava Purana. क्योंकि वैष्णव के प्रति. So we have to be very careful. This is a lesson from this narration as pointed out by Srila Prabhupada. तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है वैष्णव के प्रति अपराध से. यही शिक्षा है प्रभुपाद जी यहाँ इंगित कर रहे हैं. He lost all his spiritual strength. All his spiritual strength he lost due to the offense. जो सारी योगिक बल है, जो आध्यात्मिक बल है, वो खत्म हो जाता है अपराध के कारण. Any question? आप में से किसी का? Yes. Hare Krishna. Thank you for the lecture. I have a question that you were talking about the Dhritarashtra. So generally when God appears on this planet, so he comes with his devotees. So I wanted to know that whether Dhritarashtra was a devotee in previous life. You have to repeat the question. प्रभु जी का प्रश्न है कि जो Into the mic, please. प्रभु जी का प्रश्न है कि जो भगवान है, No. he is asking Maharaj that the Lord appears to save his devotees. Lot of what? Lord appears, Lord incarnates to save his devotees. He incarnates in the form of devotees? To save the devotees. Or save devotees? Yeah. So the Dhritarashtra, he was a devotee of the Lord. Previous life. In his previous life, Dhritarashtra was a devotee of Lord. I'm sorry, but I can't really answer that question. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो भगवान है वो आते हैं, अवतार लेते हैं अपना भक्तों की. I don't know if that's stated in the Mahabharata. Has anybody read the It's been so long since I've read the Mahabharata that I don't recall that information. Has anybody recently read the Mahabharata? तो प्रभु जी ने ऐसा प्रश्न पूछा है कि जो धृतराष्ट्र हैं क्या पिछले जन्म में वो भक्त थे. तो महाराज कह रहे हैं कि इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है. महाराज पूछ रहे हैं आप में से किसी ने महाभारत अगर पढ़ा है हाल फिलहाल में तो उनको शायद पता हो सकता है. Yes. तो ये प्रभु जी कह रहे हैं कि वो भक्त हैं. He knows the answer? Yes. He is telling that Dhritarashtra was a devotee in previous life. Devotee in his last life. Then he must have performed aparad. तो महाराज कह रहे हैं उनको उन्होंने हो सकता है ऐसा अपराध किया होगा तभी उनको इस प्रकार का. Being born blind is extreme sinful reaction. अगर कोई अंधा उत्पन्न होता है तो इसका मतलब कि उसने बहुत पाप कार्य किए हैं. Any irregularities of the body, such as
being born deaf or being born blind, being born with crippled body, etc. This is all due to sinful reaction. तो शरीर में किसी भी प्रकार का विकार है अगर कि बचपन से ही जन्म लेते ही अगर वो अंधा है या बहरा है या शरीर का कोई अंग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब The amazing thing is that we see sometimes devotees in our movement, we see sometimes have all kinds of debilities. They may be physically crippled. तो हम ऐसा कई बार अपने आंदोलन में भी देखते हैं कि जो भक्त हैं उनके अंदर भी कभी समस्या आ जाती है। Yet their destination is personally determined by by Prabhupada and by Krishna. लेकिन जो भक्त हैं उनकी जो स्थिति है वो स्वयं प्रभुपाद जी और कृष्ण के द्वारा निर्धारित की जाती है। There's one devotee in a wheelchair. He's been in a wheelchair for life, and his body is very distorted actually. तो महाराज बता रहे हैं कि एक भक्त हैं जो कि व्हील चेयर पे हैं काफी समय से और उनका शरीर बिल्कुल ही ऐसा है। I remember hearing perhaps 20 years ago. मैं 20 साल पहले सुना था। He was supposed to die. तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। You know who I'm talking about? You don't know. He's always constantly associating with devotees, constantly associating with devotees. He's physically deformed and has nothing to do with his Krishna consciousness. He's situated in proper Krishna consciousness. He is, you could go so far as to say, unaffected by his physical condition. His mind is very sharp. तो वो जो भक्त हैं वो हमेशा क्योंकि भक्तों के संग में रहते हैं और हमेशा कृष्ण भावनामृत रहते हैं, उनका जो शरीर का विकार है उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देता और उनका जो दिमाग है बहुत ही तेज है। He's doing very nicely in his Krishna consciousness. At this point, he's a senior devotee, you know. और वो कृष्ण भावनामृत में बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं, अभी वो एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं। So, in the Bhagavad-gita, Krishna says the intricacies of action are difficult to understand. तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो कर्म है उनकी जो गति है उसको समझना बहुत How all these things are going on, you know. किस प्रकार से घटनाएं घटित The great mystery of the material energy. तो ये जो The laws of karma भगवान की जो बहिरंग are described as stringent. तो जो प्रकृति के नियम हैं वो बहुत ही गहन। So we see that even some devotees may take birth homely. तो हम देख सकते हैं कुछ भक्तों का जन्म बहुत अच्छे घर में होता है। Others may be very beautiful. This is their prior activities. बहुत सुंदर है, लेकिन ये सब उनके पुराने जन्मों के कर्म के ऊपर। It affects even devotees. तो शायद वो बड़े। Okay, thank you very much. Jaga Guru Sri Prabhupada ki jai. Granatira Shrimad Bhagavatam ki jai. Gopa Manande Hare Hare.